Welcome back to my channel नीलू's क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू's क्लासरूम। तो आज मैं आपके लेके फिर से आई हूँ ईवीएस की वर्कशीट। ये हमारी थर्ड वर्कशीट है और क्लास 3 स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले भी मैंने अपनी 2 वर्कशीट शेयर की है, मैथ्स की भी शेयर की है, हिंदी की भी शेयर की है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं ये थर्ड वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो इसमें हमने टॉपिक्स जो लिए हैं एयर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंडिया से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैं लेके आई हूँ, जिसमें हम मोस्टली जो टॉपिक्स के अंदर चीज़ें थी वो हम कवर कर लेंगे इसलिए, और ये समझने में भी ईजी होता है। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स डैश टू लीव। All living things needs air to live. Second, air is a dash of many gases. Air is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. The layer of air surrounding the earth is called the layer of earth surrounding the earth is called atmosphere. Dash is needed for burning. ठीक, air is needed for burning। और air में क्या प्रेजेंट होता है? air में होता है ऑक्सीजन, और we can say that air or oxygen is needed for burning. Moving air is called wind। तेज तेज जो हवा चलती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड। एयर इज नीडेड टू प्रोड्यूस साउंड। एयर होता है एनवायरनमेंट में, इसीलिए हमें सुनाई देता है कोई भी साउंड, बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल एंड एयर इज अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल, इसलिए हमें सुनाई देता है। Vehicles that move on road are means of land transport. Vehicles that sail on the surface or below the water are called water transport. Vehicles that can move in the air or space are called air transport. The word dash means exchange of information. The word communication means exchange of information. India has two types of festival. Dash festivals and dash festivals. तो एक होली, दिवाली, ईद एंड अनदर इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे। तो जो पहले मैंने होली, दिवाली, ईद एटसेट्रा बताया, ये सब होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, एंड जो अदर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, वो होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947. India became republic on 26th January 1950. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. Dash is a harvest festival of Kerala. ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। मेन 2 टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल, बट तीसरे टाइप का भी फेस्टिवल होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, लोहड़ी, ओणम, ये सब क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब क्रॉप्स हार्वेस्ट किए जाते हैं तो अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है। तो एक तरह का ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल भी एक टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं।
Mahatma Gandhi is the dash of our nation. Mahatma Gandhi is the father of our nation. Gandhiji believed in non-violence. He said dash is the best policy. He said that honesty is the best policy. Gandhiji wore only dash clothes. So Gandhiji wore only cotton clothes, और खादी के क्लोथ्स जो पहनते थे. Fibers occur in nature are called natural fibers. Fibers occur in nature are called natural fibers. For example, silk, wool, cotton. Man-made fibers are called synthetic fibers. Synthetic fibers, for example, polyester, terracotta. Plants with soft stems are called herbs. Plants with soft stems are called herbs. Herbs बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर, ग्रास, मिंट, छोटे छोटे होते हैं ना. डैश इज अ श्रब. तो आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोज इज अ श्रब, तुलसी इज अ श्रब. अ डैश टर्न्स इनटू प्लांट्स. अ सीड टर्न्स इनटू प्लांट्स. सीड्स टर्न इनटू प्लांट्स. तो सीड पहले होता है और वो फिर धीरे धीरे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम बना के बनता है एक प्लांट. अ प्लांट ब्रीथ थ्रू dash in their leaves. Plants breathe through small pores in their leaves. Breathe through small pores, or these small pores are called stomata in their leaves. Dash gives supports to branches, leaves and flowers of a plant. Dash gives supports to, तो कौन सपोर्ट देता है? स्टेम गिव्स सपोर्ट टू ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट. पंपकिन इज अ विच टाइप ऑफ प्लांट? इन विच कैटेगरी? पंपकिन इज अ क्रीपर. क्रीपर जिसको स्टैंड करने के लिए सहारे, सपोर्ट की जरूरत होती है, और ये लाई डाउन होते हैं हॉरिजेंटली इन द सॉइल, क्योंकि पंपकिन्स बिग फ्रूट्स होते हैं और इनके प्लांट स्टैंड नहीं रह सकते. We cannot live dash water and air. We cannot live without water and air. अब यहाँ पे observe the following items below and find out which one are natural and which one are man-made. तो यहाँ पे कौन नेचुरल है, कौन मैन-मेड है? तो एरोप्लेन जो है, this is man-made. Parrot, natural. Or birds, natural. Fruits, natural. Or this one is man-made. Houses of man-made. तो ये मैन मेड और ये हो गए नेचुरल. देन चूज द करेक्ट आंसर्स. चूज द करेक्ट आंसर्स. Group of tissue forms an organ, the cell, a system. Group of tissue form an organ. सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से बनते हैं अ सिस्टम. Our body uses dash to burn food and release energy. Our body uses
ऑक्सीजन। डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।